A body of mass 2 kg moving with velocity v initial 3 I cap plus 4 j cap meter per second enters into a force field of 6 Newton directly directed along positive z axis. If the body remains in field for a period of 5/3 seconds, then velocity of the body when it emerges from the force field is v initial 3 I cap plus 4 j cap force is applied in fz direction 6 k cap and mass is 2 kg. Force applied in fx direction and fy direction is 0. Hence, ax acceleration in x direction, acceleration in y direction is also 0. The velocity in x and y direction remains constant. The x axis, y axis and this is z axis. X, y, z, 3 I cap, 4 j cap or initial velocity in z direction is 0. Acceleration in z direction is fz by m 6 k cap upon 2 3 k cap. Vz is equal to uz plus az into t 0 plus 3 k cap into 5/3 5 k cap. The final velocity will be velocity in x direction is 3 I cap, y direction 4 j cap and z direction is 5 k cap. So 3 I cap plus 4 j cap plus 5 k cap. Option second is correct option. A person traveling on straight line with uniform velocity v1 for a distance x and with uniform velocity v2 for next 3x distance, 3x by 2 distance. The average velocity in this motion is 50 by 7 meter per second. If v1 is 5 meter per second, then v2 is, suppose person moves from A x AB तक डिस्टेंस x और यहाँ पर वैल्यू स्पीड इज v1, तो टाइम टेकन फॉर क्रॉसिंग A to B is t1 and that is x by v1. Then he moves B to C, distance is 3x by 2 and this is speed, velocity is v2. Then t2 time taken from B to C is 3x by 2 by v2 or 3x by v2. Total distance x plus 3x by 2 is equal to 5x by 2. Total time is t1 plus t2 x by v1 plus 3x by 2 v2 or x 1 upon v1 plus 3 upon 2 v2 or x v1 is 5, 1 by 5, 3 upon 2 v2. Average velocity
total distance or total displacement, 5x by 2 upon x 1 by 5 plus 3 upon 2v2, x से x क्रॉस हो गया तो 5 upon 2 1 by 5 plus 3 upon 2v2, and this is given 50 by 7. 50 by 7 5 से डिवाइड कर दें बोथ साइड तो 7 1 by 2 1 by 5 plus 3 upon 2v2 और 20 1 by 5 plus 3 by 2v2 is equal to 7. 4 plus 30 by v2 is equal to 7, or 30 by v2 7 minus 4 is equal to 3, then v2 is 30 by 3 10 मीटर पर सेकेंड. तो v2 की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज 10. A sport person runs around a circular track of radius r such that he traverses path AB, AB. The distance travelled and displacement respectively are. जो पाथ ट्रेवर्स है वो ए से चला बी पर एंड बी से फिर ए पर एंड देन फाइनली यहाँ से वो बी पर. जो टोटल पाथ ट्रेवर्स्ड है दैट इज 3/2 ऑफ सर्कमफ्रेंस. तो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस मूव्ड इज 3/2 इंटू सर्कमफ्रेंस थ्री बाई टू इंटू 2 pi r is equal to 3 pi r. Displacement finally he reaches diametrically opposite A to B. The displacement will be equal to diameter is equal to 2r. So 3 pi r is distance and 2r is displacement. Fourth option is correct. A helicopter flying horizontally with a speed of 360 km per hour at an altitude 2 km drops an object at an instant. The object hits the ground at point O 20 seconds after it is dropped. Displacement of O from the position of helicopter where the object was released. Use acceleration due to gravity 10 meter per second square and neglect air resistance. A helicopter is flying somewhere here. ग्राउंड से
2 kilometer above. This is 2 kilometer. The speed of this helicopter is 360 किलोमीटर पर आवर. यहाँ से एक पैकेट ड्रॉप करता है, तो पैकेट का मूवमेंट होगा, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल बी 360 किलोमीटर पर आवर, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में दैट विल बी 0. तो पैकेट विल मूव लाइक दिस एंड it hits at O. Time taken to hit this is given as 20 seconds or 20 by 60 into 60 hours. Two by 360 hours. So horizontal distance, this is horizontal distance covered, x, and this is given y. So x will be speed of helicopter 360 kilometer per hour into time t. 360 into 2 by 360 is equal to 2 kilometer. Displacement, अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको मिला दें, दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट. सपोज दिस इज r, and r will be x square plus y square root 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट equal to 2 root 2 kilometer. This will be the displacement of O from the position of helicopter. This fourth option is correct option. Which of the following curves possibly represent one dimensional motion of the particle? A, this is phase time, और ये ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इससे कंपेरिजन करें, अगर फेज को हम थीटा में डिनोट करें तो थीटा विल बी सम कांस्टेंट, अगर एम ही माने तो एम इंटू टी एंड सी. तो एम टी प्लस सी. थीटा फेज इज लाइक दिस. एसएचएम में अगर हम डिस्प्लेसमेंट होता है एम्पलीट्यूड साइन थीटा और ए साइन एम टी प्लस सी. इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर हम कंपेरिजन करें, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई डॉट इज इनिशियल फेज, तो यहाँ पर ओमेगा इज एम एंड फाई डॉट इज सी. एस एच एम जो मोशन करती है, एस एच एम में तो ये टू एंड फ्रो मोशन होती है, राइट then left side, then left side and then right side. This is a one dimensional motion, hence this option is correct. This is second is B is this velocity, V से डिनोट करें, and this is displacement अगर x है. एस एच एम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और ओमेगा टी. तो वेलोसिटी v विल बी ओमेगा टी
dx by dt is equal to a omega cos omega t. This is equation number 1, this is equation number 2. From equation 1, sin omega t is equal to x by a, and from equation number 2, cos omega t is v by a omega. If omega is 1, then cos omega is v upon a. बोथ साइड स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. दिस इज 1 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर v square is equal to a square. This is equation of circle. Circle is given, hence this may happen in linear SHM. Hence this is also correct. Velocity time graph. This is origin, और origin की left side is negative. Time cannot be negative. Similarly, same time पर दो velocity are not possible, and this is not correct. D. Total distance. Distance is time to time timely, जैसे time increase कर रहा है, distance is increasing, and this is also a one dimensional motion. तो A, B, D are correct options. So one option is correct. The displacement x versus time graph is shown in the figure below. Option number 1, the average velocity during 0 to 30 second is 10 meter per second. Average velocity is displacement upon time. Displacement is final position minus initial position into time. तो 0 पर जो initial position is at 0 second पर, और 3 second पर it is at plus 5. तो displacement is 5 minus 0, और time taken is 3 minus 0 is 5 by 3, जो average velocity. यहाँ पर 10 दिया है, hence this is not correct. The average velocity during 3 to 5 second is 0. The initial position at 3 पर 5 meter, final position at 5, so displacement will be 5 minus 5, 0, hence average velocity is 0, hence this is correct. The instantaneous velocity at t is 22 second is 5 meter per second. This is 2. तो 2 पर जो instantaneous velocity होगी, that will be the average velocity between 3 to 1 second. Average velocity is
final position minus initial position. Final position at 3 is plus 5 and at 1 is minus 5. So displacement is 5 minus 5, 10 meter, and time taken is 2 seconds. So average velocity, this is displacement, between 1 to 3 seconds. Average velocity is 10 meter by time 3 minus 1 is equal to 5 meter per second, hence C is correct. D. The average velocity during 5 to 7 second and instantaneous velocity at t is 6.5 are equal. 5 to 7 second average velocity, the displacement average velocity at the position at 7 second is 0 and 5 per 5, the position at 7 second is 0, position at 5 second is plus 5. So average velocity is final position minus 5 initial position divided by 7 minus 2 is equal to 2.5 meter per second. For 6.5 second, this is 6.5, 6.5 पर जो instantaneous velocity होगी that will be equal to the average velocity between 7 second and 6 second. 7 second per position is 7, 0, position at 7 second is 0 and position at 6 second is plus 10, hence average velocity equal to instantaneous velocity at 6.5 second will be 0 minus 10 by 7 minus 6 is equal to minus 10 meter per second. Hence, this D option is also not correct. E. Average velocity t to 9 second, t0 to 9 second. Position at 9 second is 0, position at 0 second is 0, hence displacement is 0, hence average velocity is 0. So this is correct. The correct options are B, C, E. Hence fourth option is correct. A particle moves along the x-axis and has its displacement x varying with time t according to the equation x c dot t square minus 2 plus c t minus 2 square, where c dot and c are constants of appropriate dimensions, then which of the following statement is correct? This displacement x c dot t square minus 2 plus c t minus 2 by square, or c dot t square minus 2 plus c t square minus 4t plus 4.
velocity v will be dx by dt, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, c डॉट 2t माइनस 0 प्लस c 2t माइनस 4 प्लस 0 c डॉट इंटू 2t प्लस c 2t माइनस 4। अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी का एक ही ऑप्शन है, पार्टिकल इज 4c, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 4c। इनिशियल वेलोसिटी t is 0, तो v initial will be c dot into 2 into 0 plus c 2 into 0 minus 4, this comes minus 4c, लेकिन यहाँ पर दिया है 4c, hence this is not correct। बाकी सब ऑप्शन एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, v is c dot into 2t plus c 2t minus 4, तो एक्सेलरेशन होगा dv by dt, c dot into 2 into 1 plus c 2 into 1 minus 0, 2c dot plus 2c और 2c dot plus c, तो एक्सेलरेशन होगा that is 2c dot plus c। This fourth option is correct। The motion of an aeroplane is represented by velocity time graph as shown below. The distance covered by the aeroplane in the first 30.5 seconds is, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एरिया निकालें, एरिया बाउंडेड बाय द ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स डिस्टेंस, 30.5 सेकेंड इज अप्रोक्सीमेट हियर। ये ग्राफ है ए बी सी डी, distance is equal to area A B C D O A, ये फिगर का एरिया, दिस इज सपोज D डैश, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ A B D डैश O A प्लस एरिया B C D D डैश B। ये ट्रेपेजियम है, हाफ 200 प्लस 400 इंटू 2 प्लस 30.5 माइनस 2, ये टाइम पीरियड इंटू हाइट 400, 600 प्लस 28.5 इंटू 400, 11,400, 12,000 मीटर और 12 kilometer। This option number 1 is correct। The velocity time graph of an object moving along a straight line is shown in the figure. What is the distance covered by the object between t
t0 to t4 second, t is equal to 4 second. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस गिव्स द डिस्टेंस. So this area is to be calculated. So distance d is half, AB is 2 and this is 4, this is 10. So 2 plus 4 into 10, 3 into 10, 30 meter. This option 1 is correct. Two cars P and Q are moving on road in the same direction. Acceleration of car P increases linearly with time, whereas car Q moves with a constant acceleration. Both cars cross each other at time t dot t0 for the first time. The maximum possible number of crossings including crossing at t is equal to 0 is. दो कार हैं, कार P and कार Q. सपोज टी डॉट पर किसी एक पोजीशन पर हैं, दे मीट एट टी 0 पर. कार P का जो एक्सेलरेशन है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम. तो एक्सेलरेशन ऑफ कार P इज सपोज कांस्टेंट k इंटू टी एंड कार Q का जो acceleration and that is constant. Suppose this is equal to a. t डॉट टी 0 के बाद मिलेंगे वो कार्स, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, डिस्टेंस कवर्ड विल बी सेम. 4 कार P यहाँ पर अगर इसकी वेलोसिटी थी Vp एंड इसकी Vq, AP इज इक्वल टू KT और AP होता है dV बाई dt इज इक्वल टू KT. तो dV इज इक्वल टू KT इंटू dt. बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर दिया हमने, तो Vp यहाँ पर मान ले V dV इज इक्वल टू 0 टू T KT dt. तो Vp V इज इक्वल टू KT स्क्वायर बाई 2. V minus Vp is equal to KT square by 2. So V is Vp plus KT square by 2 and this is dx by dt Vp plus KT square by 2. So dx is equal to Vp plus KT स्क्वायर बाई 2 0 इसका इंटू डी टी. बोथ साइड इंटीग्रेशन किया, सपोज 0 टू एक्स Vp प्लस KT स्क्वायर बाई 2 dt 0 to t. So x is Vp
plus kt cube by 6। तो t टाइम में जो डिस्टेंस मूव करेगा दैट इज vpt plus kt cube by 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर कार q। कार q का एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, hence x will be vqt plus half at square। Equation number 2 for crossing each other, the equation number 1 से ये both will be equal, hence vpt plus kt cube by 6 will be equal to vqt plus half at square। vpt plus kt cube by 6 plus vqt minus half at square is 0। t common vp plus kt square by 6 minus vq minus half at is equal to 0। तो 4 t 0 t is 0। तो एक बीटिंग पॉइंट इज at t0 and second is vp plus kt square by 6 plus vq minus half at, this is 0। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 vp plus kt square minus 6 vq minus 3 at is equal to 0 और kt square minus 3 at plus 6 vp minus vq is equal to 0। तो t is equal to 3a plus minus root 9a square minus 4 in 4k into 6 vp minus vq upon 2k। अगर इस फिगर को हम c मान लें तो दिस इज 3a प्लस माइनस सी बाई 2k। तो t की दो वैल्यूज आएंगी 3a प्लस सी अपॉन 2k एंड सेकेंड इज 3a माइनस सी अपॉन 2k। t की तीन वैल्यू हैं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज t0, हैंस जो क्रॉस करेगा दैट विल बी 3 टाइम्स, दिस इज 3। The maximum speed of a boat in still water is 27 km per hour. Now the boat is moving downstream in the river at 9 km per hour. A man in the boat throws a ball vertically upward with a speed of 10 meter per second. Range of the ball as observed by an observer at rest on the river is net speed of boat will be 27 plus 9 36 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें 1000 डिवाइड बाय 360 तो दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। जब बोट से हम बॉल थ्रो करेंगे
vertically upward 10 meter per second. Due to boat speed of boat, इसकी horizontal velocity will be 10 meter per second. ये जो किनारे पर जो मैन होगा उसको बॉल इस तरह से दिखाई देगी, ये उसकी रेंज होगी. तो टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2, अगर ये वी वाई है और ये वी एक्स डायरेक्शन में है, 2v/y बाई जी और 2 इंटू 10 बाई 10 2 सेकेंड. तो रेंज होगी r इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी 10 इंटू 2 220 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2000 सेंटीमीटर. दिस इज 2000 सेंटीमीटर